Good morning, everyone. Welcome to the morning con call. We start with technical and derivative outlook. So, in yesterday's session, we saw that there was recovery in the market. The Nifty was up by 93 points, and we are now scaled almost at 19,150 level. So, in the last 2 days, we saw that there was recovery in the market, and 18,800 level was the level where the market has taken support as of now. So, largely, if you see that if you look at the Nifty, that 19,500 was the level from where the breakdown has come, and we are saying that there can be a slightly further negative bias if this trend follows on the downside. Right now, in the last 2 days, since there was a bounce back, the discontinuation of this trend will be seen towards 19,300. So as long as 19,000, only if 19,300 is taken out and if it sustains above those levels, then I think the further momentum will be there. But right now, we are having an opinion that this rally can sustain to, can rally till 19,300 levels. 19,500 was the breakdown level. So only in the near term or in the weekly charts when see a very strong close about 19,500, this bearish bias will be negated. On the lower side, 18,800, 18,600 is the immediate base. So that is likely to act as the support. So bias for the day is positive, and we are looking for another 100, 150 points on the upside from the current level. If you look at the Bank Nifty was also positive in yesterday's session. uh, Index was up by close to 250 points. So only barring only Axis Bank, I think all other stocks were in positive in yesterday's session. So, and if I look at this support and resistance for the Bank Nifty, 43,500 is the resistance, and will be this will be the resistance for the sorry will be the resistance, and lower side 42,500 will be the support. Bank Nifty, the value of this 200-day moving average is 43,180. So net, we need to observe that whether the Bank Nifty takes 43,500 level. If 43,500 is taken out, then there can be further upside bias in the counter. So at least for the day, I think it will be a positive bias. Stock like SBI and Union Bank are the counters which can be kept on the watch list. Coming to derivatives data, so there was a long build-up in yesterday's session, close to 2.17%. The put call ratio has also gained from 0.96 to 1.10, so this is good. And the major writing was seen in 19,300 call option and then 19,000 put option. So this will act as a support and resistance. In case of Bank Nifty, the Bank Nifty has also seen a long build-up to the tune of 6.14%. The put call ratio has gained from 0.93 to 1.18 levels. And the major writing was seen at 43,200 call option. So that will be the resistance, and 42,500 put option. So that will be the support. If we look at a little bit of the data, so then yesterday again, this on the index future, the FIS has gone short, close to 5,000 contract, and they are not a net short by 1,57,000 contract, and this long short ratio stands at 12%. So we need to keep a watch on this. Previously, at the time of panic, this FIS had almost went close to 1,96,000 contract. So right now we are witnessing a pullback. 19,300 is expected pullback for the Nifty. Only in the near term, if 19,500, 19,600 levels are taken out on a closing basis, then this entire bearish view or sideways to negative bias view will be negated, and we can see further upside. So more of a stock specific trade for the market, and bias for the day would be positive. So that's a technical view. I'll hand over to Devang sir for more research updates. Thank you. Thank you, Brijesh sir. Good morning, all. So, a couple of fundamental news from my end. First, on HCL Tech. So, HCL Tech has announced that Banco do Brazil, one of the leading bank in Latin America, has signed an agreement with HCL Tech to support the bank's digital transformation and CRM and implementation of Salesforce. So, Banco do Brazil has an revenue of approximately $52 billion, and this deal win is a fresh deal win for HCL Tech, and HCL Tech can penetrate further in the client. So that's why it bodes well for the company.
Secondly is on Z Entertainment Enterprise. So the SAT has set aside SEBI's order against Z Entertainment Enterprise promoter Punit Goenka, which barred him from holding key management positions in listed entity, including Z Group. Always there is an SEBI has the right to go to Supreme Court to challenge this order. So it's kind of a neutral for Z Entertainment. For SRF has delivered results below expectation. Revenue, EBITDA, and PAT declined by 15, 19, and 38% YOY. The specialty chemical business continues to face headwinds from inventory destocking and demand slowdown. Fluorochemical part of the business was also impacted by volume growth due to Chinese dumping. Revenue for packaging films also declined by 16% YOY due to supply cut. Revenue and technical textile business grew by 9%. So despite all these, headwinds, we see that future is looking good. That's why we have a buy rating for SRF with a SOTP target price of 2913. For APL Apollo, Q2 FY24 profitability was in line with our expectation. Overall, APL has lowered its volume guidance to 2.8 million tons from 2.8 to 3 million tons. It continues to target 4 million ton in FY25, and we expect capex intensity to decline year on, which could lead to a stronger payout year on. And broadly, we maintain our FY24-25 forecast, and we continue to value the stock at PER of 35. So considering the recent rise in stock price, we have downgraded the stock from buy to a hold. In Supreme Industries also, the management has guided sales volume growth of 23% and EBITDA margin of 14.5%. The company has reported a net sales of 23 billion, increasing 10.6% YY, while EBITDA came in at 3.5 billion, higher by 142.1% over Q2 FY23. So overall, a good set of Q2 FY23. It reported a net profit of 2.4 billion, which is robust 2x growth in net profit. We have marginally increased our net sales and PAT estimates. However, there is a sharp run in the stock price. Hence, we are maintaining a whole target price with a target price of 4,332. Castrol, while Castrol's India's Q3 CY23 sales was in line with our forecast, its margins was above our expectation, and Castrol's top line increased 5.5%, although it decreased by 11.3% QOQ due to monsoon season. So overall, we have a hold rating on the stock with a target price of 146. In PSP project, so PSP has received EPC work order of rupees $2 billion, 2 billion rupees in Ahmedabad from private and public sector. The company has not received any orders in Q2 FY24, so this order win is a positive. Order inflow guidance for FY24 is 30 billion. In FY23, their total order inflow was 34 billion. So in terms of stock performance, it has been flattish, and due to because there was no order inflow, this order inflow and what the management commentary is on Thursday needs to be watched out. We have a buy rating on the stock with a target price of 849. So that's it from my end. Over to you, Hiten. Good morning, team. Petronet announced result. Petronet announced result. So the results was slightly better. The revenue was higher by 12.6% at 12,532 crores. Profit after tax was higher by 9% at 855 crores. But Petronet announced a dividend, after which they announced a proposal for setting up petrochemical projects worth about 20,000 crores, 20,685 crores, plus or minus 10% escalation charges. So that spooked the market. So Petronet yesterday corrected 11% after this announcement, and management has come out and said many things to say it is not very negative, but market thinks what it wants. And I think in this division,
many PSUs are not making profit is what many analysts have flagged off. So Reliance is one company which makes profit, but the kind of efficiency which Reliance can bring, any company other than Reliance, the efficiency will not be there, is what everybody is saying. Tata Motor has won a tribunal for 766 crores along with interest for the stalled West Bengal Singur projects. So it will not move the needle because the revenue for Tata Motors in FY23 is almost 3,40,000 crores. 1,000 crores or 2,000 crores of extra income will not move the needle. The total revenue of Tata Motor is equal to the full competitor in India in PV, passenger vehicle. So it is not a great thing. SIS came with the results. So SIS security revenue was higher by 11.1% at 3,073 crores. EBITDA was higher by 23% at 145. EBITDA margin was similar quarter on quarter basis, slightly better year on year basis at 4.7. Profit after tax was higher by 9.9% at 75 crores. Supreme Industry came with the results. They gave a dividend of 8 rupees. Not a great results. When you compare with September 22, it will be better. But if you see in the last 10 years, this quarter, last year on year basis was the worst quarter. So based on which there is an improvement, but on all other metrics, they are not doing great. NAM India came with the results. Nippon AMC, normally the dividend payout is very good. So again, they have come out with a dividend of 5 rupees 50 paisa. Their total income was higher by 15% at 475 crores. Profit after tax was higher by 18% at 244 crores. EPS for this quarter was 3 rupees 92 paisa. The first half was 7 rupees 70 paisa. Anup Engineering came with the results. Anup Engineering, which was demerged from Arvind, it is surprising market in many ways. Because they are an engineering supplier to many important like ISRO and for. So their revenue grew by 38.5%, but the base is very low, 139 crores. EBITDA grew at 31.4%, 31.4 crores, 53% growth was in EBITDA. EBITDA margin is 22.4%. Profit after tax grew by 68% at 21.7 crores. Order book 872 crores. It is a small market cap. So, but this is one company to watch, Anup Engineering. UPL, again, disappointing results. 10,170 crores revenue, which was down by 19%. EBITDA was down by 43% at 1,573 crores. EBITDA margin was down to 15.5% versus 22.1%. It made a loss of 189 crores. Titagar Rail launches second diving support craft for Indian Navy. So it was launched yesterday. J. Kumar Infra came with the results. The order book is very good. So order book is 16,447 crores. They have a debt of 643 crores gross debt. Their revenue was higher by 9% at 1,104 crores. EBITDA 160 crores higher by 10%. Profit after tax 73 crores at higher by 9%. So the quarter EPS was 9 rupees 71 paisa. Marico also came with the results. EBITDA was higher by 15%. Revenue was almost flat. EBITDA margin was 20.1%. Profit after tax higher by 17% at 353 crores. So their margins have improved. Blue Star came with the results. In air conditioned space, only Blue Star has reported a very good results. So their revenue was higher by 19.5% at 1,890 crores. Profit after tax
70 crores higher by 66%. Their order book is 6,008 crores, which is higher by 44%. And cash in hand is 285 crores. Ion Exchange came with the results. This is related to water purifier and other things. They also reported a good results. So revenue was higher by 19%, EBITDA at 60.4 crores, margin slightly up at 11.33%, profit after tax 42.4 crores, higher by 27%. Rainbow Hospital came with the results. Not a great results, but few metrics are improving. Revenue was higher by 6.3% at 332 crores. EBITDA was higher by 7.3% at 117.5 crores. EBITDA margin is 35.3%. So their total capacity of beds is 1,655 crores. Operational bed is only 1,280 crores. Occupancy ratio is 51.4%. So once the occupancy ratio starts to improve, there you can see a re-rating. That is where many hospitals operate at 70%. Here it is very low. Fine Organic came with the results. Very disappointing results from Fine Organic. And one more thing, they are not able to improve, expand capacity. And Europe and US markets are very weak. They are export dependent. So their revenues were down by 41% at 540 crores. Profit after tax down by 50% at 103 crores. EPS 33.71, which is almost down 50%. With that, over to you, team. थैंक यू सर. गुड मॉर्निंग एवरीवन. अभी हम लोग ये कॉल को एक बार अंत में कर लेते हैं. मोस्ट अपडेट है एचसीएल टेक के ऊपर. एचसीएल टेक ने अनाउंस किया है कि वो बानकोड द ब्राजील थ्रू के साथ जो बिडिंग प्रोसेस है वो उन्होंने चूज किया एचसीएल टेक को, जो सपोर्ट करेंगे बैंक का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जर्नी एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेल्सफोर्स. सो बेसिकली एचसीएल टेक क्रिएट करेंगे डेडिकेटेड टीम फॉर द स्पेशलिस्ट एक्सटेंसिव ऑफ सीआरएम एक्सपीरियंस, जो इम्प्लीमेंट करेंगी सेल्सफोर्स सॉल्यूशन फॉर बानको द ब्राजील के लिए. और ये यूज करेंगे 4 सेल्सफोर्स सॉल्यूशन जो इम्प्रूव और ट्रांसफॉर्म करेंगे कस्टमर एक्सपीरियंस. देन फाइनेंशियल सर्विसेज क्लाउड जो बेसिकली रिड्यूस करेंगे सर्विस कॉस्ट, और ऑटोमेशन और एम्पावर होगा फ्रंट ऑफिस जो डिस्कवर की इनसाइट और उनके जो कस्टमर्स हैं उनका फाइनेंशियल नीड कंप्लीट करेगी. मार्केटिंग क्लाउड टू डिलीवर जो कस्टमर एक्सपीरियंस होगा, सेल्सफोर्स इंटीग्रेशन मैनेजर होगा, इंटीग्रेशन एंड ऑटोमेशन सॉल्यूशंस होगा, ओवरऑल प्रोफेशनल सर्विसेज इंश्योर करेंगे सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन. ये जो बानको द ब्राजील एक लार्ज बैंक है अराउंड $52 बिलियन के अराउंड, तो ये डीवी जो है वो कंपनी के लिए अच्छी होगी. जी एंटरटेनमेंट के ऊपर अपडेट है. सैट सिक्योरिटीज अपलेटेड ट्रिब्यूनल जो है उन्होंने कल बोला कि सेबी ने ऑर्डर दिया है कि अगेंस्ट दी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड जो प्रमोटर पुनीत गोयनका है उन्होंने किया था होल्डिंग की मैनेजमेंट पोजीशन कोई भी लिस्टेड एंटिटी में इंक्लूडिंग जी ग्रुप की जो भी कंपनीज है उसमें. तो ये एक एक्सीडेंट होगा जी सोनी मर्जर के लिए, बट सेबी ने ये अपील अगेंस्ट ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट में किया गया है. देन एसआरएफ के ऊपर अपडेट है. एसआरएफ ने डिलीवर किया है जो रिजल्ट बिलो एक्सपेक्टेशन. रेवेन्यू टू एबिटा है वो डिक्लाइन हुआ है 15% से. पैट भी डिक्लाइन हुआ है. ओवरऑल हम लोग देखे तो स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस है वो कंटिन्यू फेस कर रहा है हिंडरेंस इन्वेंट्री डिस्टॉकिंग में, और डिमांड जो है वो स्लो डाउन है एग्रोकेमिकल सेगमेंट में. फ्लोरोकेमिकल्स पार्ट में देखिए बिजनेस में तो इम्पैक्ट हुआ है बोथ वॉल्यूम और जो प्राइस डिक्लाइन हुई थी उसके कारण. बेसिकली चाइनीज डंपिंग ऑफ सीजन था, लोअर डिमांड थी इंडस्ट्रियल केमिकल के लिए. रेवेन्यू फ्रॉम जो पैकेजिंग फिल्म बिजनेस है वो डिक्लाइन हुआ है 16% से ईयर ऑन ईयर. प्राइसिंग प्रेशर था और कमीशन ऑफ सेवरल न्यू लाइंस थी रीडिंग सप्लाई ग्रोथ के कारण. रेवेन्यू फ्रॉम टेक्निकल टेक्सटाइल्स बिजनेस ग्रो हुआ है 9% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से बाय रेटिंग है और जो टारगेट प्राइस है 2913 है. एपीएल अपोलो ट्यूब्स क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर 24 का प्रॉफिटेबिलिटी है वो इनलाइन आई थी. इबिटा पर टन इंक्रीज हुआ है 25%. वॉल्यूम ग्रो हुआ है 11.9% ईयर ऑन ईयर.
देन हम लोग ओवरऑल देखें तो अप्रैल का जो टारगेट था 400 to 500 kT ऑफ वॉल्यूम्स फ्रॉम रायपुर प्लांट फाइनेंशियल ईयर 24, वो एक एड मार्जिन इम्प्रूवमेंट देखी गई मेनली इन सेकेंड हाफ 24 में। ओवरऑल एपीए ने लोअर किया है उनका वॉल्यूम गाइडेंस 2.8 मिलियन टन्स। ये कंटिन्यू टारगेट रहेगा कंपनी का 4 मिलियन टन्स फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए। कंपनी एक्सपेक्ट करिए कि कैपेक्स इंटेंसिटी है वो डिक्लाइन होगी, जो ओवरऑल लेड करेंगी स्ट्रॉन्गर पे आउट्स एंड लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से हमारा रेटिंग है होल्ड। सुप्रीम इंडस्ट्री के भी नंबर्स आए थे, नंबर्स इनलाइन आए थे। हम लोग देखें तो कंपनी ने हेल्दी अप ट्रेंड सेल्स वॉल्यूम सपोर्ट किया है, पॉजिटिव डिमांड डायनामिक्स पाइपिंग सेगमेंट में। मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ अराउंड 23% होगा, EBITDA मार्जिन 14.5% होगा फाइनेंशियल ईयर 24 एस्टिमेटेड के लिए। कंपनी ने रिपोर्ट किया नेट सेल्स 23 बिलियन का, जो इंक्रीज हुआ है 10.6% ईयर ऑन ईयर। EBITDA है वो 3.5 बिलियन का है, हायर आया है 142.1% ओवर अ क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर 23 का। कंपनी ने नेट प्रॉफिट 2.4 बिलियन का रिपोर्ट किया है, रिड्यूस्ड ग्रोथ है वो 283.2% है ईयर ऑन ईयर। मार्जिनली इंक्रीज हुआ है नेट सेल्स पर पैट एस्टिमेट्स हुआ है, और शार्प रनर अप ऑलरेडी स्टॉक प्राइस में देखा गया है। लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से होल्ड रेटिंग है, टारगेट प्राइस है 4,332। कैस्ट्रॉल के ऊपर अपडेट है, कैस्ट्रॉल का जो क्वार्टर 3 कैलेंडर ईयर 23 का जो सेल्स है वो इनलाइन था, टॉप लाइन इंक्रीज हुआ है 5.5% ईयर ऑन ईयर। और हम लोग ओवरऑल देखें तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ 8.5% ईयर ऑन ईयर, बट डिक्रीज हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 12% से 51 मिलियन लीटर्स रिपोर्ट किया है। EBITDA इंक्रीज हुआ है 4.4% से ईयर ऑन ईयर 2.7 मिलियन रिपोर्ट किया है। और लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से होल्ड रेटिंग है। पीएसपी प्रोजेक्ट के ऊपर अपडेट है, पीएसपी को ईपीएस वर्क का ऑर्डर रिसीव हुआ है 2 बिलियन का अहमदाबाद प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर से। ये आफ्टर नो न्यू ऑर्डर्स था क्वार्टर टू फाइनेंशियल 24 का, तो ये पॉजिटिव है। ऑर्डर इनफ्लो गाइडेंस फाइनेंशियल ईयर 24 का एस्टिमेटेड 30 बिलियन है, टिल डेट ऑर्डर इनफ्लो 9.6 बिलियन है। हम लोग पीएसपी का इनफ्लो देखे तो 34 बिलियन का है, और टप्स ऑफ स्टॉक परफॉर्मेंस देखे तो फ्लैटिश। ओवरऑल हम लोग देखें तो लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से बाय रेटिंग है, टारगेट प्राइस है 849। टाटा मोटर्स कंपनी है, उन्होंने बोला है कि उनका जो आर्बिट्रेशन पैनल है उन्होंने रूल किया है फेवर, जो रिकवर करेंगे 766 करोड़ इंटरेस्ट वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से सिंगर नानो प्रोजेक्ट, जो कंपनी का जो फोर्स जो स्क्रैप किया था। तो बेसिकली बट ये इतना इम्पैक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि ओवरऑल टाटा मोटर्स का जो रेवेन्यू इससे बहुत ही ज्यादा है। देन फिनोलेक्स इंडस्ट्री इंडिया के ऊपर अपडेट है, बोर्ड ने अप्रूव किया एक्सपांशन प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चरिंग रिसाइकलिंग शिप। उसकी जो कैपेसिटी है वो 20,000 ईपी है फ्रॉम पॉलिस्टर एंड टेक्सटाइल वेस्ट के। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होगा कंपनी का सब्सिडरी, जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी वो 150 करोड़ की है। HFCL कंपनी है, उन्होंने लॉन्च किया कंप्रेसिव सूट नेक्स्ट कनेक्टिविटी प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशन एट इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 में। DCM श्रीराम कंपनी सेटअप करेंगे शुगर प्लांट लोनी उत्तर प्रदेश में, इंक्रीज करेंगे कैपेसिटी 9,400 TCD, जो पहले था 7,300 TCD। देन एसएस के भी नंबर्स आए थे, रेवेन्यू 11.1% से हायर आया है, पैट भी 9.9% से हायर है 750 करोड़ का। सुप्रीम इंडस्ट्री के भी नंबर्स आए थे, कंपनी ने 8 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर किया, नंबर इतने कुछ अच्छे नहीं आए थे। हम लोग देखे तो ईयर ऑन ईयर पे ये क्वार्टर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। नाम इंडिया के भी नंबर्स आए थे, डिविडेंड के हिसाब से देखे तो नाम इंडिया एक अच्छा स्टॉक है, 5.50 पैसा का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। इनकम 50% से हायर आया है, पैट 244 करोड़ रिपोर्ट किया है, ईपीएस ये क्वार्टर का 3.92 है। अनूप इंजीनियरिंग के भी नंबर्स आए थे, डीमर्जर अरविंद के होने के बाद सरप्राइजिंग है मार्केट के लिए। रेवेन्यू 38.5% से हायर है, बेस बट है वो लो है 139 करोड़ का। इबिटा मार्जिन 22.4% से हायर है, पैट कंपनी ने 21.7 करोड़ का रिपोर्ट किया है। ऑर्डर बुक कुछ अराउंड 872 करोड़ की है, स्मॉल मार्केट कैप है, तो ये एक स्टॉक पर वॉच आउट कर सकते हैं। यूटीएल के नंबर्स आए थे, नंबर्स इतने कुछ अच्छे नहीं आए थे। देन जीके कुमार इंफ्रा के भी नंबर्स आए थे, डेप्ट कंपनी का भी 643 करोड़ है ग्रॉस, ऑर्डर बुक काफी अच्छी है, रेवेन्यू 9% से हायर है, पैट कंपनी ने 73 करोड़ का रिपोर्ट किया है। मैरिको के भी नंबर्स आए थे, इबिटा मार्जिन पे काफी अच्छी गई ग्रोथ देखी गई, 22.1% से हायर है, पैट
17% से हायर है, 353 करोड़ का रिपोर्ट किया है। ब्लू स्टार के भी नंबर्स आए थे। एयर कंडीशन स्पेस में यही कंपनी है जिसने अच्छे नंबर्स रिपोर्ट किए। रेवेन्यू जो है 19.5% से इंक्रीज हुआ है, 1890 करोड़ के अराउंड है। पैट भी ऊपर, ये ऑर्डर बुक है वो भी हायर है 44% के अराउंड। कैश इन हैंड 285 करोड़ के हैं। रेनबो की भी नंबर्स आए थे। रेनबो के नंबर्स इतने कुछ अच्छे नहीं आए थे। रेवेन्यू 6.3% से इंक्रीज हुआ है 333 करोड़ के अराउंड। ऑपरेशनल बेड है वो 1280 के अराउंड है। जैसे ऑक्यूपेंसी रेशियो इंप्रूव होगा वैसे ही कंपनी का रेटिंग होगा। That's it from our end. Thank you everyone for joining the morning con call. Have a nice day.